I would like to first of all thanks Mr. Raghuraj ji, Mr. Majumdar ji. Mr. Raghuraj ji especially came from Aligarh for this program. Mr. Majumdar who came from West Bengal. I, from the inner core of my heart, would like to thank both of them. I would like to thank all the awardees, those who have come from all over the world. Someone has come from USA, UK, Canada, Germany, New Zealand. We all welcome you. And our thanks to Padam Shri Dr. Shah, Rupalia ji, and all our guests, those who are here. You know, there are few people, those who have done a lot of work and kept the flag of India wherever they have gone. I would like to invite few of them, what all they have done, what all achievements they have done. I would like, so that they should tell you what all they have done. Is Professor Manish Parekh there? He is from UK. I would like to invite him to just enlighten us what all he has done and how he has made our India proud. Thank you. And thank you to all the respected guests. So I'm Manish Parekh. Originally my family hails from Rajasthan, but I'm born in the UK, but I've always maintained a very strong relationship with India. We come every 6 to 12 months. My wife is in Delhi, from Delhi as well. So most of my work has been, I'm an infectious disease physician and academic, a professor in the UK. And over the last 2 years I've been looking after corona patients. And I run a number of studies for the UK government and advise the UK government on coronavirus, but particularly on the fact that it's affected in England populations of Indian origin and people who come from overseas. So a lot of the work that I do is on research and also teaching, but also looking after patients. So I'm very grateful for the award and looking forward to it. Thank you. We have very eminent personality, Mr. Garish Pant from UAE. He is the recipient of the President's Award. I would like him to come and tell something about his achievements. He is doing wonders. He is doing wonders. First of all, I would like to thanks to Deepak ji and all the dignitaries in the dais and all the NRIs who came across the globe और सभी ऑडियंस और हमारे मित्रगण। मूलतः मैं उत्तराखंड से हूँ और बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली में। मेरे साथ मेरे पिताजी आए हुए हैं और आज मुझे इस जो मौका मिला है बोलने का, उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे माता पिता का। आज जो भी कुछ मैं उनकी वजह से हूँ। तो मैं सबसे पहले वो जिन्होंने गांव से शहर दिल्ली और दिल्ली से हमें इस काबिल बनाया कि हम अपने माँ बाप का नहीं, अपने देश का भी दूसरे देशों में नाम रोशन कर सकें। और ये भारत की संस्कृति है और वी आर प्राउड एंड स्पेशली हम हिंदुस्तानी जहाँ भी जाते हैं हर जगह भारत को और अपने हिंदुस्तान को दिल में रखते हैं और उसके लिए देश के लिए काम करते हैं। मैं दिल्ली में पढ़ा हूँ, यही मेरी पढ़ाई हुई है और दिल्ली से दुबई का सफ़र सोचा नहीं था कभी दुबई जाऊँगा। बस ये था कि कुछ करना है देश के लिए, समाज के लिए। जो मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे पिताजी आज भी समाज सेवा करते हैं, तो वही स्वतंत्रता सेनानी से पिताजी और पिताजी से मुझ तक जो संस्कार सभ्यता मिली है, उसी सभ्यता को लेकर मैं समाज सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं नहीं कुछ करता, लेकिन करने वाला कोई और है। और मैं इन पिछले 8 साल में दुबई में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को अक्रॉस द ग्लोब भारत भेजने की कोशिश कर चुका हूँ, जिसमें आप anyone who are stuck in Dubai or any country wherever any Indian is stuck, not only Indians, कहते पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी हो, चाहे अफ्रीकन हो, एशिया हो, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी मेरे पास अगर जानकारी आई तो इंडियन कॉन्सुलेट और माननीय सुषमा स्वराज जी जब टीम के संदर्भ साथ मिलकर जो काम किया, और आज उसका मुझे इतना आशीर्वाद मिला कि आई एम द फर्स्ट एंड यंगेस्ट पर्सन हु गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा 2019 में वाराणसी में दिया गया था। और उन सब के लिए मैं अभी तक ये आगे काम कर रहा हूँ। मेरा जीवन का लक्ष्य भी है कि मैं देश और समाज के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि हमने तो यही सीखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हर कोई काम हर इंसान कर सकता है, बस वो जज्बा और दिल में होना चाहिए। और वो जज्बा है, इसलिए माता पिता का आशीर्वाद है और कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी आप लोगों के बीच में से ही हूँ। मेरे पिताजी छोटी सी दुकान करते थे, उस दुकान में मैंने भी सब्जी बेची है, पान भी लगाया है, एंड कभी सोचा नहीं था कि मैं देश के लिए समाज के लिए कुछ कर पाऊँगा। और जो भी कुछ हूँ बस अपने माता पिता और देश और समाज के लिए कर रहा हूँ। मेरे लायक कोई सेवा हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। What a great and heart-touching speech by Mr. Girish Pant. I would like to invite Mr. Parminder Singh Sandhu, he is from UK, to tell him something about himself and what all he has been doing to keep the flag of India high in UK. Thank you, Deepakji. Honorable Chief Guest, Honorable Member of the NRI Society, and all my dear friends, thank you for being with me in this very, very precious moment. Myself is Dr. Parminder. I am from University of Kent, UK. So, मैं भी अपने देश की भाषा में शुरू करता हूँ। मैं पंजाब से हूँ। पंजाब का बहुत छोटा सा एक टाउन है जीरा, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो मैं वहाँ से अपना 10th वहाँ से किया है। उसके बाद मैंने +1 +2 RSD कॉलेज फिरोजपुर से किया। तो मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे और मम्मा भी स्कूल टीचर थे, लेकिन बहुत छोटे छोटे थे तो मम्मा का शी पास्ट हुए। और डैड ने हमें बहुत करा, बहुत मोटिवेशन के साथ बड़ा करा। वो एक मोटिवेशन थी, वो वहाँ पे खींच के लेके आई कि फिरोजपुर में कुछ करना है। तो फिरोजपुर में हमने बहुत मेहनत करा थी ब्रदर सिस्टर में। तो आई गॉट द स्टेट स्कॉलरशिप इन माई +2। Then I tried my best to go to the medical college. Somehow that didn't happen. Then I joined the University of Amritsar. On the basis of that scholarship, I got the BSc Honours and MSc Honours in Chemistry. तो एक साल फिर मैंने कॉलेज में जॉब करा और सेम कॉलेज में जहाँ पढ़ा था वहाँ भी टीचर के साथ मैंने पढ़ाया। वो डिफरेंट फीलिंग थी। सो वहाँ के प्रिंसिपल थे, वो कहते थे परिंदर आप यहीं पे रुक जाओ, आपको हम यहीं पे सेटल कर देंगे, यहीं पे पक्का कर देंगे। मैं कहा सर यहाँ मेरे को यहाँ पे कुछ करना है, डिफरेंट करना है, तो मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर करें। तो देन आई गॉट दी स्कॉलरशिप फ्रॉम दी CSIR, ये फंडिंग एजेंसी है जो स्कॉलरशिप देती है PhD करने के लिए। तो आफ्टर गॉट द PhD स्कॉलरशिप आई जॉइन IIT दिल्ली। तो यहाँ पे मैंने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में प्रोफेसर HM चावला हैं, अब तो वो रिटायर हो गए, उनके साथ मैंने PhD करा। तो वो वहाँ से बहुत कुछ सीखा, कैसी लाइफ को और मोर क्लोजली बहुत कुछ पढ़ा अपने सब्जेक्ट के बिना। PhD करने के बाद फिर मैंने काफ़ी पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर एक यूनिवर्सिटी में काफ़ी जगह पे अपना काम प्रेजेंट करा और ट्रैवल भी करा। PhD खत्म होने के बाद I got this opportunity to go to Germany. I got the funding from government of India. They sent me to Germany for some work to do related to my field. इसके बाद I went back to UK. वहाँ पे मैंने पोस्ट डॉक्टरल साइंटिस्ट के 2-3 जगह पे यूनिवर्सिटी में मैंने काम करा। That was very wonderful opportunity. इसके बाद I joined the academic life. I joined University of Kent. तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से काम करते करते और बाकी यूनिवर्सिटी में काम करते, अब यूरोप में जाना, यूरोप में स्विट्ज़रलैंड में जाना, इटली में जाना, वियना में जाना और कंट्रीज हैं। हम पोलैंड गए तो वहाँ पे जैसे आपकी आइडेंटिटी को देख के लोग बड़े इम्प्रेस होते, तो अच्छा लगता था। वो पूछते थे कि आप इंडिया से हो, इंडिया से प्रेजेंट करें, हाँ यस। और एक आपका वो कल्चर रखना, अपनी आइडेंटिटी रखना, वो बहुत अच्छा लगता था आपको। वो फीलिंग है वो आपको काफ़ी आगे तक ले जाती है, आपके साथ उसके साथ अटैच करना। तो उसी को लेके हम मोटिवेशन के आगे बढ़ते गए और सब उसकी बख्शिश से हम आज मैं यहाँ पे खड़े हैं। तो मेरे साथ हैं मेरे वाइफ अर्जीत, मदर इन लॉ, and I would like to dedicate this award to my dad as well.
So he has a lot of contribution to us what we are today. So unfortunately he passed away in December last year. So we came here to just say last goodbye to him. So and we joined this event after that. So this award to you, Dad, and you are Thank you very much, Parminder Singh ji. Whatever you are because of your dad, and your dad is blessing you. This is the first award, and you are going to get several other awards after this. I would like to invite Dr. Abhishek Gupta from UK. Please. Namaskar sabko. Thank you very much, Deepak ji, and the organizing committee and the chair guests. My name is Dr. Abhishek Gupta, and I will use Hindi, Punjabi, and English to be clear to my state, to my country, and where I reside. तो मैं पटियाला से हूँ जी ओरिजिनली. तो एकेडमिकली मैंने पहले ऑनर्स की बायोकेमिस्ट्री में, फिर मैंने एमएससी की और यूजीसी नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया. देन फॉर रिसर्च पर्पसेस मैं इंग्लैंड चला गया 2004 में. तो वहाँ मैंने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पढ़ाई की. एंड आफ्टर दैट आई रिसर्च इनटू फिंगरप्रिंट्स. तो वेरी डाइवर्स, क्योंकि नॉर्मली अगर आपने क्रिमिनल को पकड़ना है तो यू नीड टू हैव इनफ डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स. पर अगर अनफॉर्चुनेटली आपको वो ना मिले तो इन दैट केस आई रिसर्च इनटू पोरोस्कोपी. जो हमारे स्वेट पोर्स होते हैं दे आर वेरी यूनिक. एक स्क्वायर इंच में वी हैव रफली अराउंड 2700 पोर्स. और मैंने रिसर्च किया कि तकरीबन अगर मेरे को आप 12 से 15 पोर दे दें, यू कैन इमेजिन एक स्क्वायर इंच में 2700 हैं, अगर हमें 12 से 15 मिल जाए तो आई कैन कंफर्म दैट इट्स दैट पर्सन. उसी बेस पे मैंने बुक लिखी बाय द नेम ऑफ पोरोस्कोपी, जो कि पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है. तो थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ माय कंट्री, माय टीचर्स एंड स्पेशली माय पेरेंट्स. उसके बाद मैं एकेडमिक रोल में आया एंड आई रिवर्टेड बैक टू फार्मेसी. तो जो मेरी करंट रिसर्च है, मैं क्रॉनिक वुंड्स पे काम करता हूँ, क्रॉनिक वुंड मैनेजमेंट. सो इन लिटरेचर एंड स्पेशली इफ यू आर अ क्लिनिशियन एंड यू आर प्रैक्टिसिंग, you will see that in literature there are cases where people have been living with chronic wounds for over 10 years of their life. अगर आप सोचें कोई chronic wound के साथ 10 साल से रह रहा है, not just the patient, imagine the quality of life of their family as well. Socio-economical burden एक country के लिए कितने implications हैं, cost की, society के लिए कितनी implications हैं. तो considering that, मैं biosynthetic hydrogels बनाता हूँ. तो मैंने से बायोसिंथेटिक, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बैक्टीरिया को यूज़ करता हूँ, उनको शुगर खिलाता हूँ और फिर वो मेरे लिए बहुत अच्छी सेलुलोज बेस्ड हाइड्रोजेल बनाते हैं. तो यस, बायोसिंथेटिक हाइड्रोजेल. देन आई हार्वेस्ट इट. तो मैं उसको निकाल लेता हूँ, प्योरीफाई करता हूँ, और जो मेरी हाइड्रोजेल्स हैं वो इतनी प्योर हैं कि आप उनको खा भी सकते हैं. यू कैन इमेजिन कि आप अपनी पट्टी को, अपनी ड्रेसिंग को आप खा भी सकते हैं, obviously before applying to the wound. I don't suggest you to consume it. So when I go back to chronic wounds, no matter what type of patient we are talking about, तो हर तरह का पेशेंट जो है उसमें माइक्रोबियल बायोबर्डन बहुत होता है, उसमें इन्फेक्शन बहुत होती है. तो तब मेरी इंडियन सभ्यता, मेरी मातृभूमि की वजह से मेरे को याद आया कि मेरे को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाना चाहिए. तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा, मैंने स्टार्ट किया सिल्वर के साथ. तो आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, सिल्वर बहुत बहुत अच्छा एंटीमाइक्रोबियल है. कोई भी माइक्रोब को, बैक्टीरिया को, फंगी को आपने मारना हो, सिल्वर आप अप्लाई कर दें तो वो मार देता है. पर वो बहुत साइटोटॉक्सिक है, वो आपकी स्किन पे बहुत हार्मफुल इफेक्ट देता है और साथ में डिस्कलरेशन कर देता है, स्किन काली कर देता है. कई बार मैं ग्लव्स पहन के काम करता था तो मैं ग्लव्स उतारने के बाद देखता था कि ब्लैक डॉट्स मेरी स्किन पे हैं. दैट वाज बिकॉज ऑफ सिल्वर. तो एक कॉस्ट इज अनदर इम्प्लीकेशन. सिल्वर महंगा है, तो उसकी वजह से भी मैंने सोचा कि मैं उसको कैसे प्रोलॉन्ग कर सकता हूँ. एक तो कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है जी, और नेचुरल भी रहना चाहता हूँ. तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं रॉक्स को क्यों नहीं यूज़ करूँ.
पत्थर क्या है, मिनरल्स हैं। तो मैंने परकोलेशन यूज करके सिल्वर जियोलाइट्स बना दिए। इन लेमैन टर्म वो पत्थर बना दिए जिनमें सिल्वर ज़्यादा है। तो उसका फायदा क्या हुआ, अगर कोई जख्म में से ऊजिंग हो रही है, पस निकल रही है, तो जितनी वो ऊजिंग होगी उतना ही सिल्वर रिलीज होगा, जिस वजह से उसका इफेक्ट जो है, टॉक्सिक इफेक्ट है, वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो दैट्स व्हाट आई डिड, एंड दैट वे यू कुड प्रोलॉन्ग द रिलीज एज वेल, rather than 1 या 2 दिन के लिए छोड़ने के लिए you could leave it on your wound bed for about a week। तो कॉस्ट भी कम होगी, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स भी कम हो गए और इफेक्ट आपको फिर भी मिलेगा। पर जब हम क्रॉनिक वुंड्स की बात करते हैं, obviously microbial bioburden is a big issue, but along with that there is inflammation। आपने देखा होगा जो गंदे जख्म होते हैं उनमें सोजिश होती है। तो फिर मैंने सोचा कि in addition to antimicrobial effect, if I could have an additional property which is anti-inflammatory effect। उसके अलावा chronic wounds में oxidative stress जैसे कैंसर है और बड़ी-बड़ी एजिंग है, ये किस वजह से होती है? फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो अगर हम कोई एंटीऑक्सीडेंट भी दे दें तो उससे हमें 3 बेनिफिट मिल जाएंगे। ठीक है जी, एक तो हम बैक्टीरिया को कंट्रोल कर लेंगे, हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंट्रोल कर लेंगे और इन्फ्लेमेशन भी कंट्रोल कर लेंगे। और फिर मैंने दोबारा बीइंग एन इंडियन, आई वेंट बैक इन थॉट्स टू माय किचन एंड आई यूज्ड कर्क्यूमिन, हल्दी। तो मैंने हल्दी को यूज किया, पर हल्दी जो है वो पानी में घुलती नहीं, और अगर मैंने उसको अपनी हाइड्रोजेल्स में डालना था तो उसको पानी में घुलनशील बनाना था। तो अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ। एवरीथिंग जो मैंने बायोसिंथेटिक हाइड्रोजेल्स बनाई वो नेचुरल है, सिल्वर नेचुरल है, कर्क्यूमिन नेचुरल है। तो ये जो नेक्स्ट चैलेंज था, दैट वाज अ बिग चैलेंज, स्टेइंग नेचुरल। अगर मैं कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज कर लेता, अगर आप में से कोई केमिस्ट्री जानता है, दैट वुड हैव डिफीटेड दैट एम। तो फिर मैंने क्या किया, एक स्टार्च आपने सुना होगा, अगर हम बैक्टीरिया को स्टार्च खिलाएं तो वो एक मॉलिक्यूल बनाता है जिसको साइक्लोडेक्स्ट्रिन कहते हैं। अगर अगेन लेमैन टर्म में कहें, डोनट की रिंग की शेप में होते हैं साइक्लोडेक्स्ट्रिन, जो बाहर से वो पानी में घुल जाते हैं और बहुत स्मार्टली जो चीज पानी में नहीं घुलती उसको अपने अंदर ले लेते हैं। तो कर्क्यूमिन, हल्दी, उसके अंदर बहुत नाइसली चली गई और उसको मैंने कॉम्प्लेक्स को पानी में घोल के मैंने वो पट्टियां बनाई। तो वो पट्टियां जो हैं, वन फाइनल थिंग, जो जिसने एक बार सिल्वर के साथ काम कर लिया वो किसी और एंटीमाइक्रोबियल से सेटिस्फाई नहीं हो सकता। वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल है। कर्क्यूमिन जो हल्दी है वो एंटीमाइक्रोबियल है, पर सिल्वर के जितनी नहीं है। तब एक रात मैं सोच रहा था कि मैं कैसे इन दोनों का बेनिफिट इकट्ठा करूं, और फिर मैंने यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी, आपने सुना होगा नैनो टेक्नोलॉजी हर चीज में आजकल बहुत एडवांस्ड है। मैंने सिल्वर के नैनो पार्टिकल्स बनाए हल्दी यूज करके, और लिटरेचर में बन चुके हैं, पर वो क्या करते हैं, वो उसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में बनाते हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है और पेशेंट के लिए भी खराब है। तो मैंने क्या किया, मेरे दिमाग में आया कि उसकी जो हल्दी को तो मैं पानी में घोल ही चुका हूँ, तो व्हाई नॉट यूज दैट कॉम्प्लेक्स टू मेक नैनो पार्टिकल्स, एंड दैट इज हाउ आई मैनेज टू प्रोड्यूस सिल्वर नैनो पार्टिकल्स यूजिंग दिस नोवेल अप्रोच। मेरा पेपर है, ये वर्ल्ड में टॉप 1% में है, and moving forward I'm trying with the grace of God and blessings of my parents, तो I'm trying कि जो concept है पट्टियों का, वो मैं अगर सबकी blessings रही, I may change that completely। So maybe in the near future आपको पट्टियाँ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। I'm developing a prototype, एक बार प्रोटोटाइप हो गई, हम स्टडीज करेंगे, तो उसके बाद हो सकता है जैसे आप मोबाइल फोन वॉचेस वगैरह लगाते हैं, आप पट्टियाँ भी वैसे लगा के। थैंक यू। अवार्ड के लिए मैं थैंक यू करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, एंड इफ यू अलाउ आई वुड लाइक टू वेलकम माय पेरेंट्स, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं When we will give you the award, please get it. थैंक यू। I would like to invite Mr. Karthik Subramaniam. He is in that committee, I was being told, where all of them are white and he is the only one who is of Indian origin, brown. And sir, please let us know what all you are doing and which is that organization. We are very proud of you, sir. Thank you. Thank you. I don't have a prepared speech, so please
me just give you a very quick background myself. I was born in the south of India in Tamil Nadu, and but my father was in the railways, so I grew up all over India. I lived for a number of years in Gujarat and also in Delhi. I went to Delhi College of Engineering here in Delhi, and then did my MBA in IIM Ahmedabad. After that, I moved to the UK and lived in London for a few years, and now for the last 15 years I live in Scotland. My background is in the energy industry. I've been working in wind power, renewables, offshore wind, various kind of things. And other than that, I've also been running one of the largest cultural organizations in Scotland. I've had performances of sarod, sitar, Odissi, Kuchipudi, Bharatanatyam, everything that we've done in Scotland. On top of it, I also used to do the main Ramlila in Scotland, and for a number of years we had 30 feet Ravan, Kumbhakarn and Meghnad being effigies being brought as well. So we had a very large celebration. Up to 10,000 people used to attend it every year. So that was some of the things we did. In terms of my current role, I am a member of the Competition and Markets Authority in the UK. The first ever non-white member of that panel, which decides all mergers and acquisitions and all the economic activities, the super regulator of the UK. And I'm the first ever person of any color to have been on that panel. So that's been a very interesting journey for me. I have my family here. I'd like to say hello to them. My parents, unfortunately, are in the US right now. They really wanted to attend, but and also my father had a bit of a health situation, so it has been the last few days. There's been a bit of anxiousness. So I would like to thank everyone who's been part of my journey, including my in-laws and my parents as well. And thank you all for listening to me, and thank you very much. Please welcome, we have with us Mr. Dhillon. He is the former Deputy Chief of the Army Staff. Please welcome him. Please welcome him. Yes. I would like to invite Padam Shri Dr. Vijay Kumar Shah. He would like to say a few words. I will be failing in my duties if I don't invite him. Please, because he has made a record of the surgeries, what all he has done, and he is the president of our society. Our society's president was Dr. Bhishma Narayan Singh before him, and he has been very much actively guiding us and mentoring us. Please, sir. सबसे पहले मुझे हरभजन सिंह की याद आती है, और सबसे पहले मेरा जो कार्यक्रम की शुरुआत है I'm coming from the freedom fighters family. मेरे दादाजी थे, वो महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे, और महात्मा गांधी मेरे घर में काफ़ी दफ़ा आके गए. So I'm associated with all political leaders right from the birth. मुझे जो चलना सिखाया, बात करने को जो सिखाया, मैं अपंग नहीं था, मैं जब छोटा 7-8 साल का था तो मुझे चलने को सिखाया फ्रीडम फाइटर्स ने. मेरे घर का सब माहौल था वो फ्रीडम फाइटर का था. अभी हल्दी की बात की ना, my father was the king of turmeric. We produced the turmeric, और टर्मरिक का उन्होंने जब भी अभी बात की है, we are using this turmeric long back, and they are very healthy. My father, he died at the 90 because he was doing the business of turmeric. We are in touch of turmeric. तो बचपन से मुझे कुछ तो लगता था कि I should do something for the nation. पता नहीं था, मैं छोटा था, मैं देख रहा था मेरे पेरेंट्स, फादर मदर सब फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैं भी कुछ करूँ. फिर जब स्वतंत्र आ गए तभी तो आई वाज इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड. जब भी स्वतंत्रता मिली तो तभी हम बहुत खुश हो गए. मगर स्वतंत्रता के बाद में इमीडिएटली जो पार्टीशन आ गया, और पार्टीशन के बाद में जो लोग रिफ्यूजी आ गए, स्पेशली फ्रॉम सिंध, वो मेरे गांव में काफ़ी आ गए थे, और मेरे मम्मी ने उनको सबको संभाला.
सबको उनका ये किया और आज वो बहुत बड़े लोग हो गए। तो जो संस्कार से है और मेरा जो है तो बचपन में ऐसा हो गया, मैं एक दफ़ा आचार्य विनोबा भावे को मिलने के लिए गया था। आचार्य विनोबा भावे के साथ मेरी बड़ी बहन है, वो एक साल तक गोदान यात्रा में थे। तो आचार्य ने बोला कि विजय यू शुड डू समथिंग। मैं तो 10th स्टैंडर्ड में था, पता नहीं था क्या करना है, मगर उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिलने के लिए गया। तो इट वॉज वेरी इजी। मैं किसी MP को बोला शाम को मुझे मिलना है पंडित जी को, दूसरे दिन पंडित जी को बुलाया। मैं आई वॉज टेकिंग हिज पिक्चर, मैंने कुछ भूल की, मेरे पाँव एक पौधे पर आ गया। तो पंडित जी ने मुझे समझाया, हाथ पे हाथ की रखा और बोला कि लड़का को नेचर पर लव नेचर। तो ये संस्कार है। उसके बाद में मैंने आई वॉज इन NCC कैडेट और मैंने काफ़ी NCC में टू का वैसा भूल मारता उस समय। तो बाद में मैंने पढ़ाई के बाद में मैंने सोशल वर्क शुरू किया। आज तक मैंने 66 से आज तक मैंने 49 लाख पेशेंट के लिए काम किया है। और मैं फ्रॉम हिमालय तो कन्याकुमारी, रामेश्वरम तो अंडमान टू निकोबार। और आज मुझे बहुत खुशी है, आज का जो दिन है ना, हम सुभाष चंद्र बोस का है ये करते हैं। तो उन्होंने जहाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म हो गया, उस कटक में मैं गया, उस स्कूल में गया। उसके बाद में जहाँ उन्होंने सिंगापुर में आर्मी शुरू की वहाँ गया, मैं मणिपुर में भी गया। और जहाँ भारत का झंडा पहला अंडमान निकोबार में किया, उसी जगह मैंने सोशल वर्क किया। तो मेरा जो काम है कि बच्चे के माध्यम से समाज को शिक्षा दें। ये बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, हु आर वेरी निगलेक्टेड। ये बच्चा ये देखो, मैं दांत का डॉक्टर हूँ, दांत के बारे में तो ये करता हूँ। अगर हम जो आंगनवाड़ी के टीचर्स होते हैं, वहाँ से अगर हम बोलेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ टीथ, मेरे ख्याल से हमको इम्प्लांट कुछ करने की जरूरत नहीं। और विच आई एम ट्राइंग एंड इट इज 100% अच्छी आदत छोटे बचपन से करो, वो आदत से कम हो जाते हैं। आई वर्क इन द एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट के लिए मैंने बोला, अभी मंत्री जी से बात कर रहा था कि एक बच्चा 10 यूनिट बचा सकता है, तो हिंदुस्तान के कितने बच्चे हैं? पानी बचा सकते हैं, प्लास्टिक का यूज़ है, वाई वॉन्ट टू हैव प्लास्टिक। हमारे जो जूनी साड़ियाँ होती है सर के घर में, मैं बात करता हूँ मिडिल क्लास हायर क्लास, उनके कपबोर्ड में रखने के लिए जगह नहीं होती, तो हम स्कूल में कलेक्ट करते हैं और उससे एक साड़ी में 12 कैरी बैग्स होते हैं और वो बच्चे कैरी बैग सेल करते हैं। तो एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और इसके लिए मैंने आज तक आप बताएंगे कितना जो है 20,000 स्कूल्स में मैंने पर्सनली गया। आई ड्राइव अप टू नेपाल टू कन्याकुमारी, आई विल ड्राइव अलोन। आप पूछेंगे पैसा कहाँ से लाते हैं, आप पूछेंगे पैसा कहाँ से लाते हैं। आई गॉट अ गुड प्रैक्टिस, आई टेक राइट फ्रॉम माय प्रेसिडेंट से ऑर्डिनरी लोगों का भी ट्रीटमेंट, आई गॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। मगर मेरी जो 5 गाड़ी है, शायद यहाँ से सबसे सस्ती गाड़ी ऑल्टो में यूज करता हूँ। I don't have driver, I don't smoke, I don't drink. और मैं तो काफ़ी 5 स्टार होटल में ठहरा हूँ, मैं 5 स्टार होटल में कभी नहीं, धर्मशाला में जाता और रहता हूँ। ये देखो कोई गांव में जाऊँगा तो धर्मशाला में 500,000 रुपये में रूम मिल जाते हैं। और अभी 5,000 रुपये हमने ये किया तो 4,000 रुपये में 4,000 बच्चे तक में जा सकता है। आई सेव माई मनी, आई एम नॉट डिपेंड अपॉन एनीबडी। और इसके वजह से मुझे जो आशीर्वाद मिले हैं, बहुत बड़े आशीर्वाद मिले हैं। मदर टेरेसा ने मुझे क्रॉस दिया है, फिर किसी धर्मगुरु ने मुझे दिया, सबके आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद है। और आशीर्वाद से मैं आई में कैंसर पेशेंट, 30 इयर्स बैक मुझे कैंसर हो गया था और तभी तो राम नाम बोलने के लिए बोला था, मगर सके भगवान की इच्छा से मैं फिर नीचे आ गया। 70 से
32 मंजिले पर था, 10 लोग में थे, नीचे आ गए। उसके बाद में मैं पद्मश्री मिले और NRI सोसाइटी का जो है, आई एम द फर्स्ट मैन आफ्टर द पद्मश्री, उन्होंने मुझे किंदर रत्न दिया। उसके बाद में तो अभी मुझे एक 1000 अवार्ड्स है, मगर जो उन लोगों ने किया है, और NRI सोसाइटी का तो मैं बोलता हूँ, हरभजन सिंह की आज की बात करता हूँ। मुझे सुना है 25 ईयर्स बैक जब भी चाइना की ग्रोथ हो गई थी, तो चाइना की ग्रोथ क्यों हो गई? चाइनीज लोग जो बाहर थे फॉरेन में, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। हरभजन सिंह का सपना वही का है, उन्होंने किया है। और डुअल सिटीजनशिप किसी के, हरभजन सिंह ने किया है। उन्होंने जो NRIs को जो पहले तो वो कुछ रिलेशन नहीं थे, ही इज द फर्स्ट पर्सन, वो उन्होंने NRI का रिलेशन किया। और आई एम वेरी हैप्पी with the NRI. They say I work in 28 countries also, so I like to be work in all the places. I am freely available anytime. At the age of 83, I am traveling alone with nobody. Now I would like to honor भैया देखो, माता जी को तो हमको क्या नारी सम्मान देना मिलता है। मैं सोच कर आया था कि हम नारी सम्मान करेगा, मगर गड़बड़ में ऐसा आ गया क्योंकि आपने हस्बैंड को संभाला है। ये 2 बच्चे दिए हैं हमारे देश के विकास के लिए, बहुत बड़ा काम किया है। भाभी जी आपको सलाम करना। Thank you so much, sir. I will tell you something about Dr. Vijay Kumar Shah. I told him, sir, that your room has been booked in Ashoka Hotel for today and tomorrow. He said, आपने इतने पैसे क्यों खर्च कर लिए? मैं वहाँ पे ठहर जाता जाके धर्मशाला में. So I'm just telling you कि हमने बुक कराया, कहते हैं क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्च करने की. Now is the moment we all want to hear our chief guest, Mr. Sukanta Majumdar. Dr. Sukanta Majumdar, he is young, dynamic and doing lot of work, and we look forward to see him, the future of India. A huge round of applause for him. Thank you, Deepak ji. First of all, good evening to all of you. As Raghunath ji spoken already, that we should try to speak in Hindi, although the Hindi of Bengali people are very terrible. But I am not as terrible as Mamata Banerjee. That can I assure you. तो मैं कोशिश करता हूँ मंच पर बैठे हुए महानुभावों में रघुराज सिंह जी हैं जो हमारे बीच माननीय मंत्री जी उपस्थित है मंच पर बैठे हुए गुरिंदर सिंह जी जिसे घिरा हुआ एक तरफ इंडिया के साथ अटैच, तो वहां से मैं एक दिन पहले रवाना हुआ। पहले गाड़ी में आओ, ट्रेन पकड़ो, कलकत्ता पहुंचो, उसके बाद फ्लाइट पकड़ो, फिर दिल्ली में आओ, तो ऐसे आना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला था कि मैं जरूर आऊँगा, इसलिए मुझे आज मैं यहाँ पे आपके बीच में हूँ और आज ही मैं लौटूंगा, इसलिए आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम। और हमारे बीच में और जो महानुभाव बैठे हुए, पद्म भूषण डॉक्टर अनिल कोहली जी,
अंसारी जी शायद चले गए हैं। उपस्थित है पद्मश्री श्री विजय कुमार शाह जी और गिरीश पंत जी और मिस्टर धिल्लो जी आए हैं हमारे बीच कुछ देर पहले। मुझे मेरा हिंदी समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा। तो मैं जब मुझे चीफ गेस्ट बनाने का ऑफर दीपक जी ने बोला कि आप आइए हमारे प्रोग्राम में चीफ गेस्ट बनिए, तो मैं थोड़ा असमंजस में था क्योंकि इतने गुणीजनों के बीच मैं एक साधारण पार्टी का कार्यकर्ता और बाय प्रोफेशन में एक प्रोफेसर हूँ। बोटनी पढ़ाता था यूनिवर्सिटी में। 2008 से पढ़ाना शुरू किया कॉलेज में। जब भाई साहब बोल रहे थे बैक्टीरिया, वो मेरा भी फील्ड है, थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन उसके बाद राजनीति में आने का मौका मिला, पार्टी ने मौका दिया और पार्टी ने 19 में टिकट देने के बाद के वहाँ पे मैं जीत के आया। उसके बाद स्टेट का प्रेसिडेंट 2000 इस साल में मतलब 22 में स्टेट का प्रेसिडेंट बना। तो बहुत ही छोटे जगह से मैं आता हूँ और आज मैं जब आपके हर सब का स्टोरी सुन रहा था तो सब कोई छोटे से जगह से आ रहे हैं। ये भारत का स्ट्रेंथ है। हमारे मुझसे पहले भी जो लोग बोले थे कि ये धरती जो है ज्ञान की धरती है। नाम हमारे देश का भरत राजा से आया, कोई बोलते भरत मुनि से आया, लेकिन अगर इसको हम एनालिसिस करें, भा मतलब नॉलेज, रत मतलब द कंट्री व्हिच इज कंटिन्यूअस कल्चरिंग द नॉलेज, दैट इज नोन एज भारत। तो हम इसलिए भारत में हमेशा, आज भी देखिए इसी के घर में कोई ऋषि मुनि का फोटो लगा हुआ होता है। अंबानी अडानी का फोटो कोई नहीं लगाता, कोई विवेकानंद का ही फोटो लगाता है, कोई जैन मुनि का फोटो लगाता है, कोई ऋषि का, कोई गुरुदेव का फोटो लगाता है घर में, जिनके पास पैसा बहुत कम है लेकिन जिन्होंने कुछ त्याग किया है, जिनके पास कुछ नॉलेज है। तो हमेशा हमारे देश को नॉलेज ने सींचा है, इस देश को, और इस नॉलेज के पीछे ही हम भागे। पिछले कुछ सालों में जैसे मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि नॉलेज हम जो यहाँ पे जो सभ्यता के शुरू से हमने इस नॉलेज को कल्चर किया, बीच में वो खत्म हो गया। बीच में हम क्या करने लगे, बाहर के लोगों को देख के उसका ही कॉपी पेस्ट रिसर्च में करने लगे। इसके वजह से कंट्री, हमारा देश बहुत पीछे चला गया। लेकिन मोदी जी का ये जो भारत है, ये नया भारत है, नया दिशा में दिख रहा है। और जितने भी NRIs आप हैं, आप सबको मेरे तहे दिल से शुक्रिया है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जिन लोगों का काम जो केमिस्ट्री वाला काम है और थोड़ा वो समझ में आया मुझे, बाकी तो समझना उतना मुश्किल है क्योंकि मैं बायोलॉजिस्ट, उससे ज़्यादा तो समझ नहीं पा सकता। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं कि आप NRIs मतलब सिर्फ आप उधर काम कर रहे हैं, उस देश को संवर्धन करते हैं, इतना ही नहीं, आप भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वहाँ पे भारत को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कभी बंगाल से अतीश दीपंकर तिब्बत में गए थे, जाकर उन्होंने वहाँ पे बुद्धिज्म का नॉलेज लोगों को दिया। ऐसे जब आप यूके में है, कोई कनाडा में है, तो आपने भारत दिखता है। आप हमारे देश को वहाँ पे जाके आप रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को समझ में आता है, कल्चर में समझ में आता है कि भारत क्या है। ये ऐसा देश है जिस देश दूसरे देशों से थोड़ा अलग है। बाकी जो देश है, कंट्री क्या है, उसका पॉलिटिकल बाउंड्री के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पे देश क्या है, इसका डेफिनेशन हमारे शास्त्रों में दिया गया। क्या दिया गया? विष्णु पुराण कितने सालों पहले लिखा गया, किसी को पता नहीं। वहां पे ये बोला गया, उत्तरंजत समुद्रस्य हिमद्रस्य इव दक्षिणं वर्षं तद भारत नाम भारतीय अत्र संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में बैठा हुआ जो भूमि है, इसको भारत बोलते हैं, इसके संतानों को भारत ही बोलते हैं। ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है हमारा, आज देखिए पाकिस्तान इतने साल हो गया हमेशा लड़ रहा है। क्यों? बिकॉज उनके पास आइडेंटिटी नहीं है। कंट्री विदाउट नेशन, वो नेशन क्या है समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, बाबर, अकबर सब तो पढ़ा रहे, उसके बाद जाना कहाँ पड़ेगा? चंद्रगुप्त मौर्य में जाना पड़ेगा, चाणक्य में जाना पड़ेगा, वो उनके पूर्वज है। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो कंट्री विदाउट नेशन बन गए हैं। इसलिए हमेशा आपस में लड़ रहे हैं। आने वाले दिनों में वो बिखर जाएगा, क्योंकि जिस देश का नेशन या जाति कौन सी जाति है इसका परिचय नहीं होता, वो देश ज्यादा देर टिकता नहीं। और इसीलिए हमारे नेशन का हमारे परिचय है, इसलिए हम हजारों सालों से टिके हुए हैं। कितने हजारों सालों से टिके हुए हैं ये पता नहीं। जैसे
मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी ने बहुत बढ़िया बोला, पूरे पूरे विश्व को शून्य हमने किया। मोदी जी बहुत अच्छा बोलते थे। मोदी जी, आपने मोदी जी का भाषण तो सब सुनते हैं। वो कभी विदेश जाते थे एज ए गुजरात चीफ मिनिस्टर, उनसे पूछा जाता था कि भारत के लोग क्या आज भी सांप से खेलते हैं, सपोरे बोलते हैं ना, सपोरे है क्या? तो मोदी जी बोले नहीं, हमारा डिटोरिएशन हो गया, आज हमारे लोग सांपों से नहीं माउस से खेलते हैं और उससे दुनिया बदल देती है। तो मोदी जी का जो चिंतन है ये पूरे देश को आगे लेके जा रहा है। और ये चिंतन सिर्फ ऐसे नहीं, आप सोच सकते हैं, मेरा उदाहरण लेके सोच सकते हैं। मैं कलकत्ता से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर अवे रहता हूँ, जहाँ पे कोई फ्लाइट कनेक्टिविटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। उस जगह से एक साधारण से कार्यकर्ता को उठा के पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया, स्टेट का। तो ये जो पार्टी का जो रिवोल्यूशनरी थिंकिंग है, ये रिवोल्यूशनरी थिंकिंग गवर्नमेंट में भी दिखता है। इसलिए हमारा गवर्नमेंट ऐसा थिंकिंग कर रही है, जो थिंकिंग आगे आने वाले दिनों में इस देश को, भारत को विश्व गुरु बना के छोड़ेगा। और हम एज ए भारतीय सब हम इस पे गौरव करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें आप जो NRIs हैं, उन सबका रोल बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही वाइटल है। क्योंकि आप बाहर रहते हैं, आपके पास एजुकेशन की कमी नहीं है, आपके पास सोर्सेस की कमी नहीं है। उस सोर्सेस को कैसे हमारे देश के हितों के लिए काम में लगाया जाए। पूरे देश में आज भी मोर देन 113 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से नाम मोदी जी ने दिया है, लेकिन अगर हम चालू भाषा में बोले तो पिछड़ा हुआ जिला बोलेंगे। इन ऐसे पिछड़े हुए जिले में से एक मैं भी जहां से बिलोंग करता हूं, मेरा जिला पिछड़ा हुआ जिला है। तो ऐसे जिले को अगर आप लोग आए और आगे आने वाले दिनों में उनके लिए क्या कर सकते हैं, उन इलाके के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, जिससे वहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम हो या एजुकेशन सिस्टम हो, इन सारे चीजों का हम डेवलपमेंट कर पाए। क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं एक साइड बोल रहा हूँ, मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, उसी टाइम मैं बोल रहा हूँ मेरे इलाके से एट प्रेजेंट एक भटनागर अवार्डी साइंटिस्ट बैठे हुए हैं मेरे इलाके से, जहां पे आप फ्लाइट तक नहीं पहुंचते। आप जानते हैं भटनागर साइंस के बैकग्राउंड के जो है, तो पता है कि भारत में अगर बोले साइंस का नोबेल जिसे बोले भटनागर अवार्ड दिया जाता है, हाईएस्ट अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस इन इंडिया। तो मेरे वहां पे डॉक्टर तापस कुंडू है, शायद अभी वो CDRI लखनऊ के डायरेक्टर है, वो मेरे इलाके से छोटे से गाँव से पले बड़े हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स की कमी नहीं है। मेरे डिस्ट्रिक्ट से पश्चिम बंगाल, मैं खुद पश्चिम बंगाल बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, अभी भी गांव देहातों में पश्चिम बंगाल बोर्ड को सबसे उम्दा समझा जाता है। तो मेरे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप जिसका वर्णन मैंने किया इतना पिछड़ा हुआ है, वहां से हर 2-4 साल बाद स्टेट टॉपर आता है, मेडिकल टॉपर आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स कितना है आप सोचिए। लेकिन हम इन ह्यूमन रिसोर्स को सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। कभी हरगोविंद खुराना जी हमारे देश छोड़ के चले गए, जाके उन्होंने जेनेटिक कोड का जो ट्रिपलेट नेचर है, दो साइंटिस्टों के साथ मिलकर वो कितना बढ़िया आविष्कार किया और उनको नोबेल मिला। तो ऐसे लोगों को अगर हम हमारे कंट्री में रख पाए तो आगे आने वाले दिनों में यही हमारे कंट्री की काम आएगी। क्योंकि अभी जो लड़ाई होती है वो हाथों से नहीं होती, ताकत से नहीं होती, दिमाग की ताकत से लड़ा जाता है, ब्रेन की ताकत से लड़ा जाता है। इसलिए हमारी कंट्री की, हमारी देश की ये जो डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, कास्ट, क्रीड, ये सब डाइवर्सिटी को हमें इनका इस्तेमाल करते हुए जो ऐसे पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्टों का हमें लगता है कि डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए। और आप जो NRI लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आइए आप में से कोई मेरे डिस्ट्रिक्ट में आइए कभी घूमने के लिए, कि कैसे आदमी है, कैसे लोग हैं, देखिए हर पार्ट में आइए, आप घूमिए, देखिए पूरे भारत को। क्योंकि घूमने के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन ऐसे छोटे जगहों में जाके, जैसे भाई साहब बोल रहे थे दार्जिलिंग गए थे कुछ दिन पहले, मैं उसी दार्जिलिंग में 2 साल पढ़ाया, दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में। मेरा फर्स्ट कॉलेज टीचिंग वहां से शुरू हुआ था 1948 में, शायद दार्जिलिंग नहीं 1925 में दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड। तो इतना पुराना कॉलेज है। तो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, आज काठमांडू के भाई साहब मिले थे, तो उनसे मैंने नेपाली में, गोरखाली में 2 बातें किया कि मैं दार्जिलिंग में, भाई साहब सामने बैठे हैं,
तो मैं वहाँ पे 2 साल रहा, तो उनके भाषा सीखने के लिए मुझे थोड़ा बहुत मौका मिला। ऐसे भारत का जो ये इतना ब्यूटीफुल कल्चर है, मैं जब सोचता हूँ तो ऐसा मुझे लगता है शायद दुनिया में ऐसा कोई देश होगा जिस देश में इतनी प्लूरलिज्म है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतने लैंग्वेजेस हैं, और जो लोग हमें टीच करते हैं, बोलते हैं बीच बीच में सेकुलरिज्म, प्लूरलिज्म, बहुत बार चीजों पे लेक्चर देते हैं, एक्चुअली उनके खुद के देश में ही ऐसा नहीं है। सच बोले तो हमारे देश में वो जो है, और यही भारत की स्ट्रेंथ है। और हमारे जो जनता है, ये जनता एक मैं बोलूं तो छुपा हुआ एक न्यूक्लियर पावर है। आपको उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। हर व्यक्ति में इतना टैलेंट है, इसके जो हमारे पास अभी इसको निखारने के लिए एक हीरा जब मिलता है माइंड से, तो हीरा का चमक नहीं होता, उसको तराशना पड़ता है, तब जाके उसके चमक में चमक आती है। तो एजुकेशन क्या है, इसलिए विवेकानंद ने बोला है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। ये विवेकानंद ने बोला है, और मैं उसी भूमि से आता हूँ। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र का आपने बात बोला कि आज विक्ट्री डे है, मैं उसी भूमि से आता हूँ। विवेकानंद का भूमि, राम मोहन राय का भूमि, जिन्होंने रेनेसां शुरू किया पूरे भारत में, और श्री चैतन्य महाप्रभु का भूमि। हमें बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं है, ये जो सत्याग्रह बोलते हैं, हम सब जानते हैं कि गांधी जी ने चालू किया। ये गांधी जी से सालों से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने सत्याग्रह पहले चालू किया था। छोटा सा इंसिडेंट है, मैं बोलता हूँ। उस समय बंगाल में सुल्तानेट रिजीम चल रहा था, हुसैन शाह शायद बंगाल में तख्त में थे। तो वहाँ पे नवद्वीपुर के जो जगह है, जहाँ आप जानते हैं इस्कॉन ने आज घर घर में हरे कृष्णा मूवमेंट चला दिया, पूरे विदेशों के विदेश में। उसका हेडक्वार्टर है मायापुर, जो नवद्वीप में आता है। वहाँ पे काजी ने फरमान जारी किया कि आप हरे कृष्ण नहीं बोल सकते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि आइए आप, तब तो सत्याग्रह काम नहीं था, तो हम इसका विरोध करेंगे। कैसे विरोध करेंगे? मारपीट करके नहीं, हम मृदंग लेके उस काजी के घर के सामने जाके हरे कृष्णा चैंटिंग करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो उन्होंने किया, और काजी डर के मारे भाग गया। दिस इज वाज द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द इंडिया, व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द हिस्ट्री। तो बंगाल ऐसी भूमि है, लेकिन बहुत सालों से बंगाल में इंटेलेक्चुअल जो एरिना है, बाकी जो एरिना है, उन्होंने वो एरिना को लेफ्ट जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी ने उसको पूरी तरीके से उसको कब्जा करके रखा। इसके वजह से बंगाल लास्ट 40 इयर्स, उससे भी ज्यादा समय से डिटोरिएट कर रहा है। जो बंगाल कभी अतीश दीपंकर से लेकर एक से एक बढ़िया साइंटिस्ट भेजने के लिए फेमस था, आप जानते थे, अमर्त्य सेन से, रिसेंट अगर बात करें, अमर्त्य सेन से लेकर सबको अगर पकड़ ले तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, मेघनाथ शाह, एक से एक बनकर साइंटिस्ट। आज वो बंगाल पूरी भारतवर्ष में माइग्रेंट लेबर सप्लाई करता है। ऐसा डिटोरिएशन हो गया, सबको पता है। जो अदर स्टेट में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे, डीएलएफ बिल्डिंग तैयार कर रहा है। कौन जा रहा है काम करने के लिए? बंगाल से लोग जा रहे हैं। कभी बिहार से, यूपी से लोग टैक्सी चलाने के लिए, जूट मिलों में काम करने के लिए बंगाल जाया करते थे। उड़ीसा में से बहुत सारे लोग बंगाल जाया करते थे। लेकिन अभी ऐसा हालत हो गया कि बंगाल में से लोग छोटे छोटे काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस जगह से बंगाल को बचाना है, क्योंकि बंगाल जो कल्चरल जो कैपिटल है, जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल कंट्री का है, अगर बोले तो बंगाल है। कि बंगाल की हिस्ट्री को अगर देखेंगे, एक से एक बढ़िया साइंटिस्ट, एक से एक इंटेलेक्चुअल्स, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, एक से बढ़कर एक, रविंद्रनाथ टैगोर, किसको छोड़ के फर्स्ट एशियन टू गेट द नोबेल प्राइज, ऋषि अरविंदो, किसको छोड़, इतने बढ़िया लोग आए हैं इंटेलेक्चुअल, जिन्होंने ऐसा तथ्य दिया पूरी दुनिया के सामने, जिसे लोग आज भी जी रहे हैं। आज शील प्रभुपाद की वजह से हरे कृष्ण मूवमेंट पूरा दुनिया में चल रहा है, और उस बंगाल का ये हालत है। इस जगह से बंगाल को निकालने के लिए आप लोगों का हेल्प चाहिए। इसलिए मैं बंगाल, एज ए बंगाल के प्रेसिडेंट, मेरा ड्यूटी है कि मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ूं और मांगू कि आइए, आपका जो इंटेलेक्ट है, आपका जो कैपेसिटी है, वो आइए बंगाल में यूज कीजिए। और बंगाल की इस जगह से, जो बंगाल जो दौर से जा रहा है,
जो काले अध्याय से जा रहा है, ब्लैक डेज के अंदर से जा रहा है, इसको बाहर निकालिए। इसी के साथ मैं एक छोटा सा श्लोक बोल के, मैं जो मेरा थीम था कि हमारे हर व्यक्ति में पोटेंशियलिटी है। हमारे शास्त्र में एक कथा है कि एक बार चरक सुश्रुत के पास पढ़ने के लिए गए थे। तो तब मेडिकल कॉलेज में टेस्ट होता था, आज भी होता है, तब भी टेस्ट था। तो उन्होंने सारे स्टूडेंट को जंगल में भेज दिया। जंगल में भेजने के बाद बोला कि क्या करना है गुरुदेव? तो बोले एक ऐसा पौधा उठा के लाओ जिसमें कोई औषधि गुण ना हो। तो सारे स्टूडेंट चले गए, कोई एक पौधा लाया, कोई 2 पौधा लाया। तो चरक खाली हाथ चलाया, उसके पास कुछ नहीं था। तो उन्होंने बोला कि क्या है, आप क्यों नहीं लाए? तो गुरुदेव तो उन्होंने श्लोक बोला, आमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलो मनौषधम अयोग्यो पुरुषो नास्ति जोजकस्तत्र दुर्लभ। मतलब कि ऐसा कोई अक्षर नहीं है, आमंत्र अक्षरम नास्ति, जिससे कोई मंत्र रचित नहीं हो सकता। ऐसा कोई मूल नहीं है, मतलब कोई प्लांट नहीं है जिससे कोई दवाई या औषधि नहीं तैयार हो सकता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई गुण ना हो, जिसको तलाश करना चाहिए। इसी के साथ आप सबको नमन करता हूँ। और NRI वेलफेयर सोसाइटी जिनका प्रोग्राम है, उनका नाम मैंने जो नहीं लिया, लोगों का नाम लिया। आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि जोड़ना NRIs को और उनके साथ रूट को देश के साथ जोड़ना और देश के लिए उन लोगों से काम लेना कि इस देश ने हमें बनाया। मैं जितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है और उसके साथ मेरा देशवासियों ने टैक्स भरा, इसके वजह से मैं सरकारी जगह में पढ़ पाया। अगर देशवासी टैक्स नहीं भरते थे तो मैं सरकारी जगह में पढ़ के यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो इसलिए आइए सब मिलकर कोशिश करें इस देश को, जो कभी विश्व गुरु था और विश्व गुरु होगा भी, इसमें योगदान। जगन्नाथ जी का जब रथ निकलता है तो गुंडीचा मंदिर तक जाता है, तो कहते हैं कि मैं खींचूं या ना खींचूं, रथ तो गुंडीचा मंदिर तक जाएगा ही जाएगा। पुण्यवान मैं हूं तो खींच लूं एक बार। तो भारत भी विश्व गुरु आज नहीं तो कल बनेगा। ये डिपेंड करता है हमारे सौभाग्य के ऊपर, हम कितना सौभाग्यशाली है कि उसमें हमारा योगदान कितना % होगा। इसलिए आप सबको ये आह्वान करके और मेरे सोसाइटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देकर मेरा वक्तव्य शेष करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Dr. Mujumdar. What a great speech. We would like to first welcome Mr. B.P. Singh, who is the former governor and former home secretary. He has reached. A huge round of applause for him. For Dr. B.P. Singh, huge round of applause for him. Friends, this dignitary amongst us, Shri B.P. Singh Ji, he was a former Home Secretary, the former Governor of Sikkim, and above all, he is our fatherly figure. He is our fatherly figure to our society. He has worked in close quarters with my beloved father, Shri Harbhajan Singh, Dr. Bhisham Naran Singh, Dr. G.V.G. Krishnamurti, Joginder Singh, Vasant Sathe, K.C. Pant. He was one of those figures who was shining throughout the functions with those friends who are not along with us. But we always seek his blessings, and we are so happy that he has come irrespective of the pandemic situation. People are reluctant, but he has especially come to bless us. So please, gentlemen, a warm applause for him. Thank you. I am extremely delighted to be here, Mr. President, and distinguished representatives of India located all over the world. I must start taking the cue from the President of West Bengal BJP. I was executive director of the World Bank during 1999 to 2002. And one of the jobs of the board of the World Bank is to think about the future of humanity. The French, the German, and a few other countries who were sitting next to me
One day they told me during lunch break that the future belongs to India. So we carried forward the discussion. I told them that no, we don't have electricity, we don't have high rate of education. He said, no. You have the culture that puts the problem in a sutra, and you have the ability that provides the answer. So I said, yes, I am aware of that. Then they told me, which is largely because of you people, in Washington DC and also in New York, if there used to be a problem in the bank, on interest calculation or on claims, the bank, the standard answer was, I will give it to the Indians. They will give you that. They will solve the problem. That is your merit. Now this merit has to come back to India. And I am thankful that the present Prime Minister, Honorable Sri Narendra Modi ji, has opened the doors and has given the slogan of Atmanirbhar Bharat. I am happy that all of you, through this organization, which is one generation ahead, it is not a new organization, but I am aware that when I was in the bank, and also I used to represent in the bank not only India but also Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka. Sri Lanka is in the bad state, not because of lack of talent, but because of lack of policies. Whenever the leader wants to enjoy all the powers, the country can go, and this is happening all over. So what happened was that here, mention was made of the aspiration of the state. These things were generated during the freedom struggle. I am a product of that struggle. My grandfather was a school teacher. Gandhiji came to know about his dedication. He brought him to his team, 1950. And then he said, no, you don't teach in the school. That was government funded. So he came to the village and set up the national school of Gandhiji, free. And then it happens. You won't believe. Nobody believes when I say so, but this is a fact. I had no school. I was in the village. At the age of 8, I was in class 8. I taught in my college in B. Honors Political Science. I went to Patna University, which had very many distinguished teachers from Harvard, from Cambridge, everywhere. I got highest marks, broke all previous records. And my copy was shown to the students. For 1 month, but you have to pay the money. First prize. I also paid the money, and I was surprised that I wrote all this. So whenever I go to my university, I ask, by curiosity, has anybody broken my record? I was at 19, 19. I became a lecturer at that time, at the special case of Patna University. And then a strange thing happened. There are some people from West Bengal here, in the audience also. Many of them. Some of you may be aware of
Modern Review magazine. This was the best magazine of our time by Chatterjee, was the editor, great man. Rabindranath Tagore, Gandhiji, Netaji, they have all written for that. And my father, who after all this became a lawyer, he was an avid reader, he used to keep this. So I wrote an essay and finished it on 30th January, because India had liberated. Today is also the Liberation Day. I will come to that. Goa. And he was being criticized, Nehru and the government of India, that India is no longer a believer in peace. So I was very cut up. So what is this? Colonialism can't be liberated by arms, because this is the method of exploitation. And then I was surprised that, and my professor said that it takes at least 3 years. But I'm grateful to Mr. Chatterjee. He told my article as soon as it arrived. And in the March issue, if you want to see, Goa and international law is there in the Modern Review. I was just 20. And only recently, a few years back, I was told that I am the youngest contributor to Modern Review ever. And this was it. What I'm saying is that if you have that World Bank people who told me that Sutra's solution, you can arrive at conclusions. And this is true. And this is our heritage. Our heritage is not Hindu, Muslim, Sikh, Isai. Yes, we have. You know, we are the only country which gives shelter to everyone, to every religion. And I see some Sikh here. Even today, they were feeding the refugees in Ukraine. It was not because they were obliged. It was because that Indianness, the great quality that they have learned is there. Freedom Day, today is the Freedom Day, and I had something to do with this great thing, not only because I had a family of freedom fighters. When I was 3 months old, my father went to jail. Because he was under the influence of Netaji Subhash, breaking rail lines and all. And this was on 26th January 1943. He was asked to hoist the flag. So he took the flag inside his kurta and had the stick on his back, took it out and went. They caught him. The result was he was arrested. In 1967, I got into the IS and I was the youngest again. I was hoisting the Naskal flag at a place called North Lakhimpur in Assam. That's why I put on this. This is from Assam. Then I told the crowd that in 1943, my father tried to hoist the flag and he was arrested. In 1967, I am hoisting the flag and I am getting salute. This is the difference between freedom and captivity. In the name of the strength of civilization,
It was because of arms that we were made slaves. And America itself is the example. So when Netaji decided that no, we will not accept, he had the help of Germany, then Japan, then Italy, and had a force initially of 3,000 troops, which got raised to 40,000. And he proceeded to liberate India. And that took that route from Burma, Kohima, because I have served in Northeast, so I know all these places, and also in Far, where he passed it. Separately, because in the Singapore struggle, Netaji became the head of that Andaman Nicobar Island. So Netaji was the first person who physically went inside. But there were other stations also in separate manner. There were districts which got literally liberated in 1942. They had their own. So this freedom is there the blood of the people. And it happens that you must be guided. But today that is again under challenge. Freedom lies because you have to work for it. There is a different kind of challenge to it. And the challenge is to ecology and environment, to climate. We have accumulated so much of knowledge and instruments that control the environment. We have so much of arms that might destroy the environment. So how do we liberate ourselves? This liberation is only possible when you combine the two. Nature, science and wisdom. And we should ask our students, our young and youth, that you have to understand that there is no way out. We are all interdependent. Arms can give you domination, but not protection. It is only when you combine these three qualities, and this conference has such outstanding persons here who can do that. I don't know how much time, Mr. President, I have taken. I took it, so I want to hear that. Somebody sitting next to me was a distinguished Indian in New York and other places where I have gone to deliver lectures, where I have gone to work when I was there for 4 years, from 1999 to 2002, August. And that country provides that environment. That country has challenges also of violence, but that country also has that ability. If you are the ability, if you have the ability, they will call you. I was lucky to be invited to MIT Harvard, to business school, and I have delivered so many lectures, some of them they have published. But now also they invite me, but I don't have such companions as people here. Now, traveling that distance is quite a joy. Have you all gone abroad? To United States in particular, it takes time, it requires energy. At that time I used to enjoy, but now to deliver a lecture, if you go that far,
and then you come back. It is no joke. I'm glad that you have called the non-resident Indians. They have a responsibility. And their responsibility is to look back. We had, someone of you must be knowing Naibal's name. You know, we developed tolerance for stupidity. Now these aspirational districts are being encouraged to learn the new ways. The world has moved. The changes that have happened in the last few years through internet, through digital technology. And I still remember the one when Carol was right. I know illiterates who don't know English, but they don't commit mistake on the laptop or on the telephone. They are better than me. That is the natural talent in people. And I was very happy when the government of India gave the aspirational districts where literacy is very low. The latest, that is called Type 5, internet connection. The most advanced internet connection in India has given to people who have no knowledge. But you will see that the way the change has taken place, the way the change is taking place, and with the support from people like you, that can be accelerated. And these aspirational districts, when after a few years when you come, you will find that they have been better than some of the developed districts. I have spoken for long, and I wish I could know soon that they have the ability and they have the body of the spirit, adopted some of those districts, and visited that. Develop friends, and if you have the energy of your children, must be having the energy to do that. Take them, and they may get married later. Again, thank you. Thank you. Now, after the day started with lightning lamp and hearing the stalwart speeches, we are come to the moment which we have been waiting for the award functions to start. And Dr. Parvinder S. Nidhu is receiving the award. Yes, sir. Dr. Manish Parikh receiving the award. Sir? Sir, please. Yes. Next slide. Dr. Please, madam, on the award from His excellent son. Nothing can be more proud. 20 parents evaluating of it. It's an esteemed moment for everyone. Yes. Sir. नहीं ले रहे
मैं देख रहा हूँ। Dr. Only, we have been able to hear it from him today. Dr. Abhishek Gupta for his excellent studies, and he is also accompanied by his parents. All the way from UK, come over to India to receive the award. A great round of applause for him. Excellent work. सर एक सेकंड Dr. Bishwa Mahanajena. Dr. Bishwa Mahanajena, I'd like to call you, sir. Dr. Bishwa Mahanajena receiving the award from Dr. Raghunath Singh. सर दिस साइड सर Excellent work, sir. Dr. Hargurdeep Singh Saini will receive the award on behalf of Prati Kaur from Canada. Well, I work in Canada, but I live in India very much. Canada is a second country. It is on the net all the time. Absolutely. Yeah. Thank you so much. Mr. Virendra Mishra is receiving the award by Dr. Raghunath Singh and Gurinder Singh, the General Secretary of NRI Welfare Society, and Dr. V.P. Singh. And before of the day, he had gifted a lovely portrait prepared by him to Dr. Raghunath Singh. Gentlemen, any award and any program, it gives a great memory, a great life privilege. It gives us the reason to work harder and smarter. So our name would be spread out. So this award. Mr. Giridhar Raja receiving the award. We all like to spread the loud of applause, please, for him. Mr. Manoj Mohan. Mr. Manoj Mohan with us. He is receiving the award now. Mr. Sunil Menon. Once again, and you do also have to do that. सर प्लीज सर प्लीज Now I'd like to call disciples of come over and receive the award on behalf of Guruji. Disciple Mr. Amit Sharma is receiving the award on behalf of Guruji Sri Arnab for his excellent work in spirituality and spreading peace.
Wish you all the best. Dr. He had also his book released today afternoon. Sir, please, sir. Dr. Hitendra Suri receiving the award and displaying the award Yes, in front of please. our honorable guest. A round of applause for him, please. Dr. A. Gopi Krishnan receiving the award. Sir. Dr. Abhishek Gupta receiving the award on behalf of Dr. Abhijit Majumdar from UK. Sir. Thank you. Experience over Ayurveda, adaptogen, and ancient studies of medicine would be useful for social welfare. Ujjwal Pharmacy Professor Dr. A.V. Srinivasan receiving the award from former Governor V.P. Singh and our Minister Honorable Swamiji, Raghuraj Singh ji. Swamiji, yes. See you in your home. See you in your workplace. Definitely see you. The excellent studies of Australian Welfare Association, hospitality and welfare. Dr. Ramandeep for receiving the award. Dr. Pawan Sharma receiving the award. Businessman, builder and developer, Delhi NCR, Mr. Harish Chawla is receiving the award. Of Dr. Jaswant Singh Bhandari, his grandson receiving the award. A proud grandson is receiving the award of a grandfather. What a lovely moment we are getting to observe today. Dermatologist is receiving Dr. Anil Mandal Memorial Award. A great man has been continuing over an excellent time and an entire family assembled and gathered to receive the award. Let us have a round of applause for him, please. A great moment. Sir. Yes, please, sir, please, this side, ma'am. Yes. You be ahead of him. Yes, ma'am. 1 minute. Now I'd like to call. He is receiving Yuva Award from NRI Welfare Society of his excellent work and vision to create the legacy
He is into coal, he is into multi-diverse business and carrying forward the name of his family. Mr. Vatsal Agarwal is receiving the award. For any of the youth to receive such award in such early age of life, where all professionals from different age, different area, different spectrum, from different part of the world has come forward of the excellence and received the award today. So I believe it would be a great achievement and ambition for him to do excellent work in future for our country. I will call Dr. Karthik Subramaniam. Dr. Karthik Subramaniam to please come. Dr. Karthik Subramaniam receiving the award. He is from Scotland, UK. Dr. Karthik Subramaniam, congratulations, sir. Our award functions are continuing to be taken forward, and to complete the leftover for the day to the event, I would like to call our convener of NRI Welfare Society, Mr. Deepak Singh. Congratulations to all the award winners. I would like to invite General S.P.S. Dhillon to give his to address the gathering before we go for dinner. And Thanksgiving, sir. Good evening, ladies and gentlemen. I know you must be still digesting the beautiful awards that you have received so far, and there is very little time to hear lectures over here. But I selected a topic which is related to leadership, so that we are all on the same frequency as far as our nation goes. Basically, I'd like to talk about the civil-military relationship in the Indian environment. Because we are going through very testing times, the world is going through a very testing time. Our respected chief guest, other eminent personalities gracing this occasion, I would like to thank Mr. Gurinder Singh and Mr. Deepak Singh, whose ears are somewhere else right now, for inviting me over here for this 41st International Congress of NRIs and giving me an opportunity to interact with you. In the next 5 to 7 minutes, maybe 10, I'll try and look into how relationship between civil and military leadership of the nation has played a defining role since independence of the country. As you are all aware, civil-military relationship is a very important aspect of national defense policy or national security policy, whichever you want to put it. I hope, as you all are aware, the aim of national security policy is to look after the interests of the political leadership, the civilians of the country, create an environment where people can work comfortably and securely. It has two dimensions. Firstly, it has a dimension of external threat, and second is the dimension of internal threat from insurgencies, etc., which are quite common in today's world. We'll look at it from the post-independence time. When we gained independence, we were just a very poor nation, I would say financially, not intellectually. And our great leaders had gone through a struggle to get us our independence. So they tried to give us direction which way we should go. And rightly so, they had to take some hard decisions because the tijoris were khali, nowhere to look, no direction,
We had been ruled for a long period, we had been slaves for a long period, and a new country was emerging out of this. So the focus upon, and rightly so, I will not name the leaders because all of you know what the rules of various people were, though some have been overshadowed by the others. But roles were quite different. One is that some people wanted peaceful independence. Some others, like Subhash Chandra Bose, fought for the independence from a different time. The goal was common. So these leaders firstly decided that we will have an independent foreign policy. We will be non-aligned, and there were great leaders at that time like Tito, Khrushchev, Nasser, Sukarno, all sorts of leaders, Nelson Mandela, all were emerging leaders and they were looking into these aspects. The second was development of technical education in the country, whether it was IT, IIMs, All India Institute of Medical Sciences, National Defense College, etc., etc. The third was to encourage democratic norms in the country. You will find that that not been done. Our country may have gone the same way which a lot of neighborhoods gone to. A little later, two other things came into being, which was the Green Revolution, which was post Mr. Lal Bahadur Shastri's era. Because if you recall, between 60 and 64, I think we had imported 17 million tons of wheat under PL 480, and we did not. We are facing famines year after year. And next it was followed by a white revolution, or the Operation Flood, where we achieved self-sufficiency in milk. Simultaneously, a space program was created in 1962. And also Atomic Energy Commission was created in 1948. Basically, power was a major source, or atomic energy was a major power source which was required for the country. While this was going on, there was an effort to eradicate epidemic like smallpox, which was eradicated by 1977, I think, and of course polio, because of which a lot of children were losing life. And India was declared free of polio by 2014. So this is the national leadership, and all these things impacted on our preparedness as a nation to face external challenges or internal challenges also. During this period, our armed forces were grappling with their own problems of reorganization, equipping, and doctrinal challenges, which what doctrine should we have? Should we have offensive doctrine? We should have defensive doctrine. How did we get about doing what we have? We had very little knowledge of what we are about to do. We had very little knowledge about how to get about it. Second World War had got over, and the methodology of warfare was about to change. However, it is sad to say that Pandit Nehru and Krishna Menon were biased in their opinion towards the defense service. To the extent that they had, one of them went to say that Pandit Nehru at once when asked for better rifles, etc., he said, "Unko laathiyan do, laathiyon se desh sambhalenge." And when Gen Cariappa, the then chief, subsequently Field Marshal Cariappa, walked up to him once China had occupied Tibet to ask him, tell him how to protect our eastern sector, that time Nepal, from Chinese incursions. Nehru thumped the table, and his exact words I'll read out. "It is not the business of the commander-in-chief." That time we had commander-in-chief in the army, not chief of army staff. "It is not the business of the commander-in-chief to tell the prime minister who is going to attack us where. You mind your Kashmir in Pakistan." And Nehru continued to appease China, and we had a humiliating defeat in 1960. The early 60s actually were a very trying time for the world. If you can recall some events which took place, 62 we had a war with China, from which Nehru never recovered. He went into a relapse. And 62 was also the Cuban Missile Crisis, where Soviet Union was trying to get into the backwaters of US. 1963, Kennedy was assassinated.
and 1964, Nehru came. And he was replaced by Mr. Lal Bahadur Shastri, and in Soviet Union, Mr. Khrushchev. So it was a turmoil going on in the world for power struggle. During this period also, because Pakistan had joined CEDAW and CENTO and other organizations supporting the Western world, they were armed to the teeth by United States, which gave them, I think, 70 million worth of, 700 million worth of goodies, and which emboldened them that they can take away now Kashmir or some other part of it. And they started misbehaving. First in run of Kutch, they attacked, and they also bombed the Leh-Srinagar highway. Now, the leadership at that time was wise, that they did not go to United Nations this time like they had gone 47 to 48. And they said we'll sort this problem ourselves. And they did it. So 65 war took place, and it helped the army and the armed forces redeem some of itself. And it, but however, it revealed embarrassing weaknesses in equipment and training. We were very poorly equipped. Though I was a young child, my father was also in the army, I went and saw some of those tanks which were destroyed in Cape Karan sector. That my village is there, Picuet. It was a battlefield. It was converted into a graveyard of tanks. Some tanks had just only done 12 to 25 kilometers mileage, and they had only fired 2 to 3 rounds, and the rest of the ammunition was still lying. So it was a major thing. And we had reached actually the gates of Lahore that time. So we did well. Subsequently, we fought the 1971 war, and we came out in flying colors. We took 93,000 POWs. The nation tends to forget all these things at times. I was in 65, we had captured Haripir and some other important features which were given back to Pakistan. We had captured much more territory than they did. But we have been forgiving, as they say, in many ways, maybe for the right cause. And the 93,000 prisoners were also given back without finding a solution to the Kashmir problem. The conduct of the armed forces was again praiseworthy. It came for great praise from the international community. We were pressurized. We were pushed by the Western world. We were coerced by Chinese, but nobody could do anything. Indira Gandhi was humiliated when she went to meet Nixon. I would say the unprintable words were used to her. She was demeaned, and she said, we do not want you to treat us like beggars, we'll find solutions to our problems. There were 10 million refugees which had landed. And see the synergy between the army leadership or the defense services leadership and the political leadership that time, that Indira Gandhi wanted to go straight away into Bangladesh in the month of April when the meeting took place. And General Manik Shaw, then Field Marshal Manik Shaw, said that, no, ma'am, I've got to get ready. It takes time to prepare myself. These are my war wastage reserves. This is what I have. To mobilize my formation, this will take time. So she suggested, what do you suggest? He said, we'll go after the rains. Because rains in Bangladesh, current Bangladesh or East Pakistan, is a time when everything is flooded. We will not be able to move. Secondly, this is not the right time because China can also come in. If you go in the winters, it will be better. Indira Gandhi didn't agree to the proposal. A presentation was made to the Cabinet Committee of Security, and the general's ideas were agreed. And 3rd December we went in, and in 13 days' time, 16th December, Manik Shaw rang up Indira Gandhi and told her that we got 93,000 prisoners. Bangladesh was not, word was not used. Dhaka has been captured. However, Indira Gandhi was cloud 9 and she started singing that. Great to hear that. And she went and announced to the world that we had Bangladesh had been liberated. After this bipolar world came a unipolar world, the collapse of Soviet Union. And the arrogant
am I saying that? Of the best country. They blame us for human rights, they blame us for everything, that we are, I was a slum dweller or something like that, like you were saying snake charmer or something. I went in 1990 to USA to study, and they used to ask me, I used to talk at Rotary Club and all, do you have, and they, when they saw I came to my house and saw sofas and all, they said, do you have sofas in India? I was like, that is the level of knowledge these people have, and they talk to us. And look at the amount of killings and guns and all being wielded in USA today or yesterday. I will just recall some of the damages done by USA in the world. It started in Japan with the atom bomb. It went to Vietnam. If Myla is not very, you don't remember, please read it. The treacherous things. They carried out experiments with chemicals, and carried out all sorts of things in Vietnam. Yugoslavia, Libya, Iraq, harmless nations who just wanted to have an independent policy towards buying oil, etc., were just decimated. Syria, what happened to Pakistan? Which was supporting. So being enemy of USA will be better than to be a friend of USA. That's what the catchword was going on at that time. Afghanistan. Look at what is going on in Saudi Arabia, which is having in Yemen, what is going on in other countries like Somalia. And you talk about human rights in India. They created Taliban, and now it is because of their policies, Ukraine and Soviet. They just wanted to push the NATO into Ukraine. Now, there are other institutions like United Nations, EU, your World Bank, IMF, they all run by these countries. So they can freeze your accounts, they can release your funds, they can give you loans to run your country. But we as a nation have, I can say with conviction, a very robust foreign policy as well. I'll talk about it a little later. International power balance is now shifting towards the east. And USA knows, the West knows. A cycle of 400 years is when the power shifts. And that 400 years cycle is over for England long time back. USA is already 300 years over. So, we have got 60%, 73% of the world oil in this region, 60% of world population in this region, and 5 declared nuclear states. And large economies, China, Japan, and India. So we have something to present to the world, and we can keep doing good. During this period, after 71, a steady modernization program went on till about 1998. And while this was going on, we were simultaneously fighting terrorism in Yemen and bringing peace in the disturbed states of Northeast, which had remained unaddressed for a long time. I would say there were decisions which had ramifications for the defense services also, whether it was the Sikh riots or the Kashmiri Pandits getting out from JNK or genocide was the same. Various other Bhagalpur grindings, etc. You can talk about so many things which must have happened in this period. But still we were steadily modernizing. And in 1999, I think, when Pakistan tried to change the LOC to Kargil, we sent them back, but definitely some weaknesses were observed in senior level leadership at that place, as also in intelligence. But all these things, you need money for intelligence gathering. You need artificial intelligence, you want other things. So I'm not putting the blame either way, this time I'm saying. So we learned our lesson, and we managed to put our act together and throw the enemy out. However, the decade of UPA 1 and 2, that is 2004 to 14, saw complete apathy and collapse in defense modernization. I don't know name the defense ministers and all that name, but there is no modernization which took place. There was a Bofors scandal, there was other scandals. Army was equipped with first kind of rifles. You had to find terrorists who had better rifles than you. So all that was going on.
Modi government came in, I'd like to highlight some proactive and assertive actions which are taken in bringing reforms. Some of these reforms may stand alone in the civilian field, but also, I'm not talking about triple talaq and all these things. I'm talking about which had ramifications within the army sector, also annual defense budget. First is bringing about organization change in the armed forces. We are talking about the theatre commands now, and integration in decision making. Previously, Ministry of Defense used to think differently, integrated army headquarters used to think differently. So all these have been jointly, and CDS was nominated. Second was Atmanirbharta. Atmanirbharta has done a, you must have heard about 83 Tejas aircraft being inducted. There are assault rifles which are now being imported but will subsequently be manufactured in the army. There was an embargo on 209 defense imported equipments. So you have to produce your list. It may take a little time, but will become harder. A separate fund was earmarked for supporting startups in defense and aerospace sector. Approximately 74% FDI in defense production through automatic. You don't have to go to RDI clearance, etc. So all these are having a very good effect in the armed force. Restructuring of the dead ordnance board factories, which are producing nothing. They couldn't even produce an ordinary tambu or a tent and socks for the troops. I mean, they're just eating away public money. Women empowerment, very big thing. Women have come into the armed forces, and also the anti-terror law has been promulgated. Balakot airstrikes was a morale booster for the armed forces. It was also for the nation. And resolution of Ayodhya disputes, we have religious has also added to the law. Abrogation of Article 370 in JNK and dividing it into 2 union territories without much hangama. That's a great achievement, let me tell you. I've had 6 tenures in JNK. I've served as a major, as a half colonel, as a full colonel, as a full colonel, as a brigadier, as a major. Then now they're sending me the lieutenant also. So I said, let me also have some peace and life. I have to look after my children. Those mark sheets are coming down steadily because of my absence from the family. Okay. CA and the Assam National Register of Citizens. Firstly, getting back Hindu, Sikhs and other communities from giving them shelter in the country. They're being massacred in Afghanistan, in southern Bangladesh, some in Pakistan. So it's a very good thing. All these things, if you do not have a national, whom do you go and catch if something goes wrong? So all these things are making the nation strong. What is the way forward? Briefly, Indian armed forces are likely to face 4 types of challenges in the future, including the traditional threats from China and Pakistan. See, China played a large game. They kept us focused towards Pakistan, whereas they were the main, and they remain the main. We are yet not capable individually of handling them. We want to do it. But definitely we have to fight a two-front war. Pakistan will go on. But we are a nation which is not seeking territory, but we want to defend ourselves and don't want to give up our own sovereignty. So we will definitely be able to cope up with it. We have to acquire latest technology. We have to, there's artificial intelligence, there is a lot of battlefield management systems, etc. See, winning a battle against a weak enemy does not make you a strong military. It is to be ready to face the challenges of stronger enemies who have better space technology, who have better economy than you, who have better cyber fields. Our electronic warfare systems, our countermeasures, etc. systems are all failing. So we managed to give China a bloody nose in Galwan. We have not bowed down to them in any way. We have not let them take a piece of our territory anywhere. And we've done well. And
look at our foreign minister, look at the nations all around the world. Yesterday, the USA's 2 and 2 talk, Australia 2 and 2 talk, England 2 and 2 talk, China 2 and 2 talk, some foreign minister or somebody is always there, Soviet Union, Russian Prime Minister is there, so, President, sorry. So there is a lot of activity in India-centric. You're getting recognized for what you are. And that's a great achievement in the present moment. Well, I want to end with some strengths of the armed forces, because we must appreciate what our armed forces see. A politician has power, as I say. A businessman has money. What does a soldier have? He has pride and he has respect. And the more you respect the soldier, the better he delivers. And nations who don't respect their soldiers will always lose in the long run. Firstly, we are, as an institution, we are apolitical and we have no religious biases. As a Sikh, if a battalion is somewhere in the valley or one of the big Haji Peers, Babas over there, if a Thursday fast is to be kept there or a fast, Friday fast or no drinking is to be done, they observe it sincerely. That's the respect for each religion. We have served ourselves and everybody prays. It is because of a just and fair approach in dealing with the populace, we earned a lot of respect, and because of which we have nearly 90,000 troops deployed in United Nations missions, and United Nations wants more of us. We have had 150 sacrifices in United Nations operations only. It's a very disciplined and a force which respects law. It respects and has pride in its military ethos and regimental traditions. It has a proper value system. And as I said, 8,000 troops in UN missions, 1,500, 500, sorry, not 50, having sacrificed. So we have a very solid, rock strong, as I say, base. I can with conviction say that the present day leadership of political leadership and military leadership have a great synergy, and we are ready to deliver and protect the nation from any kind of threat that we have. Thank you very much for your Thank you, sir. Thank you so much for your wonderful speech. Before going for a dinner, I would like to invite Mr. Sergei, who has come specially from Moscow, to give vote of thanks and let us know how the situation in Russia, and we all are with Russia and will always be with it. Thank you. Namaste, namaskar, good evening, dear brothers and sisters. I am so happy. My warm regards to my big friend and brother, Mr. Deepak Singh. First of all, of course, I want to greet you with such a beautiful, significant event today. It's a big honor to me be with you and touch to the spirit of Indian culture, Indian history, touch to the spirit of Indian development today. We know that Indian diaspora, one of the biggest and influence in the world globally. And Indian society actually promote spiritual treasures around all the world, and very famous because of Indian traditions. Previous speaker, he mentioned about Soviet Union and Russia and our relationships. And you know, right now, it's a very hard, difficult time. But I am so appreciated a few days ago, your Minister of Foreign Affairs of India, he was in USA, in White House, and he showed to the whole world, all international society, that India right now is completely independent country. We can see that India always follow to the spiritual value, to the human value, and that's why globally all Indian diaspora
support traditions of humanity. I'm so happy that in our last event in New Delhi here in BRICS Forum, Mr. Deepak Singh, he gave a big speech about relationships between Russia and India. And historically, we can say that two our countries, they're very close to each other. We have the similar value, we have the similar culture. And I'm absolutely sure that very soon we will show all the world that union of Russia and India will save the world. I'm completely sure, that is my belief, that is my big dream. And according to our conversation and agreement with Dr. Deepak Singh, very soon we will start event of NRI in Parliament of Armenia. I already spoke with the decision makers, with establishment representative of the politicians elite in Armenia. And like a president of International Diplomatic Club, I want to say today to all of you, thanks a lot for your brother support of Russia. Thanks a lot for your praise. God bless you. My brother Baladu. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Please join us for tea. Thank you so much for all of you coming here. Yep. Yes. Go ahead. Yes. Go ahead. Better please, yes.